So hello students, how are you all? Hope you all are doing great. So today in this class we will cover the topic excretion in human beings. So in this topic we will cover the parts of excretion, how do union multicellular excrete and how do our body excrete. So let's start this topic. First of all, what is excretion? Excretion is the process by which waste product produced during metabolic activities is removed from the body. यानी कि एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है जो प्रोड्यूस हुआ है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है आपके एक्सक्रीशन के अंदर आती है। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट? इट मींस हाउ डू यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट? सो in unicellular organism by the process of diffusion. So by the process of diffusion, amoeba excrete. In a sense, they are not having a specialized organ. They only from high concentration to low concentration, the product from their body is removed. In a very simple way. Their body is not designed very complex. Their body is designed in a simple way. So the diffusion, by the process of diffusion, they got their waste product is out from the body. Now what about unicellular organism? Unicellular organisms we have covered. Now what about multicellular organism? In multicellular organism there is a specialized organ which is known as excretory system. You might have heard about kidney. So in this excretory system we will talk about the parts of excretory system. So in multicellular organism like animals and us, there is a specialized organ which consists of number one a pair of kidney. It means we have a pair of kidney means the number of kidney is 2. Pair of ureter. Ureter. The pair of ureter, the attached tube-like structure which is attached in both the kidney. ठीक है? Ureter. Pair of ureter means 2. Number will be 2. Now third one, urinary bladder. A single bladder which is known as urinary bladder, and then ureter, and the last one is ureter. It is very simple to understand the working of kidney. So in this diagram, this is a very simple diagram I have made. You can see here are the pair of kidneys, okay, and with that there is attached the ureter, left ureter and right ureter. There are pair of ureter. In this there is urinary bladder. You can see here both the ureter are connected with urinary bladder, and at last it comes urethra. Here is the urethra. Now here it is written each kidney has number of excretory unit. It means inside the kidney, if we see inside the kidney, there are so many number of excretory unit which is known as nephrons. Now nephron has a very important function in excretory system. Let us know about that. Okay learners, now as we have discussed about the parts of excretory system, now let us understand the structure of nephron deeply. If we will understand the structure of nephron, then definitely the excretory system will be very easy to understand. Now here is the whole diagram of excretory system, and we have read that the unit of kidney is nephron. There are numbers of nephron inside each kidney.
So this part is tubular part of nephron. Then we can go this way, and then at the fourth number it comes the collecting duct. So there are four main parts of nephron you may learn or you may understand. So first one is Bowman capsule, inside it glomerular. Third one is tubular part of nephron, and fourth one is collecting duct. And there are some blood vessels, or we can say capillaries, present in the nephron. Okay, now what are the functions of this part? Let us understand. So the cup-like structure is called Bowman capsule. It contains number of capillaries called glomerulus. Okay, यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या है cup-like structure जो present है Bowman capsule कहते हैं उसको, और उसके अंदर जो capillaries है उसको कहते हैं glomerulus. Okay, now coming to the working of nephron. ठीक है, nephron act as a filtration of blood. Here in the excretory system the blood is filtered. It means you urinate daily. So how do you urinate? How is urine formed in your body? So the excretory system filters all of the blood of our body, and the waste product from the blood is taken out in the form of urine. Okay, so you can say that when our body blood is filtered, the waste is called urine. Okay, so here is the working, very simple working I have written. You might write in your notebook, and for your exams it will be very helpful. So working is renal artery. So this is the renal artery. Okay, renal artery brings nitrogenous waste. So in our blood so many waste is there. So one is nitrogenous waste, in which ammonia, urea, uric acid, it is present, and water and salts. So along with nitrogenous waste, water and salts are also salt also bring by renal artery. यानी कि renal artery के साथ तीन चीजें लाती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर एंड सॉल्ट्स. अब इनको करना है फिल्टर. ठीक है, which passes through tubular to collecting duct. यानी कि फिर वो कहाँ पास होता है? यानी कि आपका क्या है, यहाँ पे सारा का सारा जो renal artery है वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट, आपका जो सॉल्ट और वाटर उसको यहाँ कलेक्ट करती है. उसके बाद इसको क्या है आपके ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाता है. अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, वेस्ट पास टू यूरेटर. तो कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी आपका वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि ये वेस्ट हम जो पढ़ रहे हैं सारा का सारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपका यूरेटर, दिस इज यूरेटर. यानी कि यहाँ से जो कलेक्ट, इसके अंदर जो प्रोसीजर हुआ मैंने यहाँ बता दिया, उसके अंदर क्या है, उसके बाद यूरेटर के थ्रू आपका जो वेस्ट है वो क्या है आपके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या है फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो आपका यूरिन है बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो द वर्किंग इज वेरी सिंपल. ओके, एंड सेंड आउट बाय यूरेटर एज यूरिन. यानी कि यूरेथ्रा सॉरी, ओके, यूरेटर के थ्रू क्या है किडनी से बाहर भेजा जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आपका स्टोर किया जाता है. यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, आपका यूरिन स्टोर होता है, फिर ब्रेन सिग्नल देता है और आपको फिर यूरिन आती है. ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा, द नेम इज यूरेथ्रा, लाइक थ्रोइंग समथिंग. ओके, सो यूरेथ्रा का काम क्या होता है, आपका जो भी आपका क्या है यहाँ पर जो यूरिन कलेक्ट हुई है उसको क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना, बिकॉज इट इज अ वेस्ट, इट इज ऑफ नो यूज. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द यूजफुल प्रोडक्ट, है ना. यानी कि ये थोड़ी कि सारा का सारा बॉडी फिल्टर होने के बाद सब चीज बाहर दे देंगी, नहीं. बहुत सारे सॉल्ट्स और वाटर हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी फिल्टर करने के लिए हमारी बॉडी क्या है, किडनी में भेजती है. बट फिल्टर करने के बाद यूजफुल प्रोडक्ट्स भी तो निकलेंगे उसमें से, है ना. हम पानी को फिल्टर करते हैं तो क्या हमको पानी नहीं मिलता, पीने को मिलता है ना, वापस से हमारा यूजफुल प्रोडक्ट तो वाटर ही है, प्योर वाटर. तो वैसे ही क्या है, इसमें भी क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट्स आपके वापस से भेजे जाते हैं बॉडी को. यूजफुल प्रोडक्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय कैपिलरीज. यानी कि जो ये कैपिलरीज यहाँ पर कॉइल है, तो कैपिलरीज के थ्रू क्या है आपका जो यूजफुल